Hello everyone, welcome to easyexamnotes.com. So, in Python tutorial, our task is how to write and run Python programs. And here first step is select any text editor. So I am going to select Notepad. Okay, just do right click on the windows. Here is the text document. So this is my text editor for Python programming. Now the question is how to write Python program. So here answer is by using some syntax. So I am writing first code of this tutorial. Write print statement and put a string here. Welcome to easyexamnotes.com. ओके एकदम बेसिक प्रोग्राम है पाइथन प्रोग्रामिंग का. जस्ट सेव द प्रोग्राम anywhere where you want. I am saving in D drive. So I am saving as een.py. This is the name of the file. Save the program. Okay. So this is the way of writing the program. Just type your code. Okay. Then save by using name of file .py extension. So this is the answer of how to write the code. And now the question here is how to run. So just use command line, means cmd. If you are using Windows operating system, then press window plus R key. Window plus R. Okay, just type here cmd and command prompt हमारे सामने ओपन हो जाएगा. ओके, सो हमको उस लोकेशन पे जाना है जहाँ पर हमने हमारे प्रोग्राम को रखा है. सो इन माई पीसी डेट लोकेशन इज डी ड्राइव. तो मैंने यहाँ पर क्या किया, डी ड्राइव पे गया. देन डी ड्राइव पे जाने के बाद जस्ट राइट पाइथन and the name of the file. So here name of the file is een.py. Now check the output. Welcome to easyexamnotes.com. So this is the one way जहाँ पे हम प्रोग्राम को डायरेक्टली किसी भी टेक्स्ट पैड के अंदर टाइप कर सकते हैं. Another thing is using command line. On this command prompt I am just typing Python. Okay. So now here I can do Python coding. I am doing here the same code जो हमने यहाँ पर यूज़ किया था. ओके, इसी कोड को मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ कमांड लाइन पे. तो टाइप प्रिंट देन इन डबल कोर वेलकम टू easyexamnotes.com. ओके, दिस इज द राइटिंग ऑफ द प्रोग्राम कोड ऑन कमांड लाइन. नाउ जस्ट प्रेस एंटर हियर. So this is the output. Welcome to easyexamnotes.com. Now in next episode we are going to discuss about variables in Python. Thank you.